अभी रैशनल नंबर्स ही कंटिन्यू करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर विल स्टार्ट विद मेंस्ट्रुएशन, है ना, ऐसा करते हैं। एंड इन केस अगर तुम्हारा एंड सिया का क्लैश होता है तो फिर मैम हमारे ना मैथ्स में अब ऐसा होगा कि एवरी फ्राइडे सर क्लास टेस्ट लेंगे। तो अभी पिछले फ्राइडे भी टेस्ट हुआ था, अभी इसका रिजल्ट नहीं आया। अच्छा, तो मैम आप मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट कर सकते हो क्योंकि फिर वो क्लास के साथ चलेगा ना। क्लास के साथ फिर मुझे एक काम करना होगा, तुम्हारा और सिया के टाइमिंग्स को अलग अलग रखना पड़ेगा। और सिंगिंग ऑफ के तुम दोनों सेम क्लास में हो तो एक साथ ही चल जाएगा। आज तो चलो ऐसे ही कंटिन्यू करते हैं, उसके बाद मैं अब देखती हूँ तुम्हारा फिर स्केड्यूल चेंज करती हूँ, है ना। MWF ही रहेगा, टाइमिंग आई चेंज। ओके, टाइमिंग्स 7 to 8 कर दूं MWF। हाँ, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे 7 to 8 रखते हैं फिर, व्हाट से, क्योंकि ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे आई हैव क्लास। ना आप 5 to 6 रख सकते हो क्योंकि फिर मैं 7 to 8 होमवर्क वगैरह करती हूँ सारा। एक्चुअली 5 to 6 में डेफिनेटली रखती, बट नहीं हो पाएगा 5 to 6 पे, एक्चुअली ऑक्यूपाइड है थोड़ा सा इसलिए अभी थोड़ा सा कर लो। मैं मिड ऑफ द मे के बाद ना I'll change the timings back to 5 to 6. I'll try change कर दूंगी मैं। अभी थोड़े दिनों के लिए हम 7 to 8 कर लेते हैं। ओके, ठीक है, तो आज तो तुम्हें रैशनल नंबर्स ही बताते हैं फिर, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्लास से वेडनेसडे से हम मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट कर देते हैं। ओके। अच्छा, मेंस्ट्रुएशन में क्या क्या किया है अभी तक, मतलब अभी स्टार्टिंग क्या किया है, क्या पढ़ा है मुझे? Area of trapezium and area of rhombus. Okay, what is the area of trapezium? Formula क्या है? Ma'am, area of trapezium half हमने बेसिकली क्या किया सीखा है कि हमें अपने जो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम है उसको डिवाइड करना, लाइक जैसे ऐसे है उसको, जैसे हम ऐसे ट्रायंगल में डिवाइड कर दे, लाइक ऐसे यहाँ पे 2 ट्रायंगल्स हो गए या फिर ऊपर 2 ट्रायंगल इमेजिनरी ट्रायंगल्स ऐड कर दिए, ऐसे करके। कैसे? जैसे ये आपके पास एक आपका ये ट्रेपेजियम हो जाता है। चलो इस पर जितने सिया नहीं आती है, हम अपना मेंस्ट्रुएशन कर लेते हैं। 6-10 हो गए, कहाँ पर है, कहाँ ये? हाँ, तो आपने क्या किया इसमें फिर? तो फिर मैम मुझे दो ट्रायंगल्स का एरिया निकालना है और एक रेक्टेंगल का एरिया निकालना है। अब उनको फिर ऐड करके मेरे को मिल जाएगा ट्रेपेजियम का एरिया। अच्छा, ऐसे बताया आपको। अच्छा, इन केस चलो सिया आ गई है। अच्छा, आप एक बात बताओ भावनी, इन केस आपके पास ये वाला, अगर मैंने कहा कि ये ट्रायंगल आपको बनाना ही नहीं है ना, आपको ये सिंपल हमने 1 सेकेंड, हमने आपको सिंपल एक ये फिगर दे दिया है ना, एंड आई आस्क्ड यू कि आपको सेकंड ट्रायंगल बनाना ही नहीं, तो आपको बताया गया है कि दैट हाउ विल यू फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। आपको ये फिगर है, दिस इज योर ट्रायंगल, है ना, इधर आपके पास आपका ये ट्रायंगल बन जाता है और एक इधर एक फिगर ये बन जाती है। सॉरी, तो फिर आप एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कैसे निकालोगे, बताया? नहीं बताया? चलो कोई बात नहीं, हम क्लास करेंगे ना तो हम ये कंटिन्यू करेंगे, है ना। वेडनेसडे से फिर हम मेंस्ट्रुएशन ही स्टार्ट करेंगे। आज तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं, आज रैशनल नंबर्स पढ़ते हैं ना, थोड़ा सा पता चल जाएगा क्या होता है। ओके, ऑलराइट सिया, हाय, हाउ आर यू? Hello ma'am, fine, how are you? I'm good. So सिया, चलो हमने we did the properties in the previous class. Yes, right? आज it's your turn. Sorry, it's your turn to tell me all the properties, the closure, the associative and the commutative. No problem, कोई बात नहीं. sorry ma'am. That is the involuntary act of the body. No problem. चलो, हाँ, tell me. अच्छा, पहले भावनी, you tell me कि what are rational numbers?
7th में भी we studied ना, तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मुझे कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं. बताइए. हाँ. So जल्दी से बताओ. मैम रैशनल नंबर्स बेसिकली लाइक सिंपल इक्वेशंस से रिलेटेड होते हैं. जैसे द होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, ऐसे ऐसे. अच्छा एक बात बताओ, ये 4/0 मैंने लिखा, क्या ये एक रैशनल नंबर है? it's not rational number. मैम मुझे नहीं लगता. कोई बात नहीं. सी यू आर राइट, दिस इज नॉट अ रैशनल नंबर. चलो थोड़ा सा रिवीजन करा देते हो मैं तुम्हारा. What are the rational number? They are basically represented in the form of P upon Q, where Q is not equal to 0. Right? Why Q is not equal to 0? Because if I'll write 4/0, it ultimately means 4 only. मतलब कहने का ये है that कि 0 की वैल्यू डिनोमिनेटर में नहीं होती. 0 do not have any value in place of denominator, at the place of denominator. But if I write 0/4, then this is definitely a rational number, क्योंकि 0 की वैल्यू as a numerator होती है. Okay? Okay. चलो. Now these rational numbers could be either negative or they could be positive, but they can never be in the form of decimal. मैंने अगर लिख दिया 4.690, 0 नहीं लिखते, 1 लिखते हैं, 4.691, right? Now this is in the form of decimal. Huh? So this is not the rational number because it is not represented in the form of P upon Q. And अगर कोई नंबर आपका इस तरीके से डेसिमल्स में शो करते हैं, या फिर मैंने 4.66 लिख दिया है, so that is the irrational number. ठीक है, वो रैशनल नंबर्स नहीं रहते हैं, इरैशनल हो जाते हैं. ठीक है. या फिर आपका कोई भी नंबर अगर इट इज इन द फॉर्म ऑफ अंडर रूट, इफ आई राइट अंडर रूट 2, इफ आई राइट अंडर रूट 10, दे ऑल आर. इफ आई राइट पाई, पाई तो पता है ना, पाई की ऑल्दो एक वैल्यू होती है 22/7, राइट? पाई हैज अ वैल्यू 22/7 और 3.14. ठीक है. तो अगर आपको क्वेश्चंस में 22/7 गिवन है तो दैट इज अ रैशनल नंबर. But if you are given the 3.14 or pi, so that is not the rational number. They are the irrational numbers. ठीक है. Pi भी आपका irrational number ही होता है because one of its value is 3.14. चलो, ये थोड़ा सा क्लियर हो गया, right? Any query? चलो, sorry. Let's continue then. हाँ. So I was talking about the properties. See, how many properties do we have in the rational numbers? 3. Okay, 3 properties. What are they? Associative property, closure property, and commutative property. Okay, what do we do in associative property? What is the equation for it? Equation for associative is बताओ जल्दी. A plus B is equal to A plus B plus C in bracket is equal to A plus B is equal to C. A plus B plus C in bracket. Okay, this is, you are saying A plus B plus C. This whole in bracket? No, only B and C in bracket. Okay, only B and C in bracket, and they are Is equal to A plus B in bracket and then plus C. yes. Now what this associative property tells? देखो, associative property में आपको क्या करना होता है? If you are provided any question,
ठीक है, क्वेश्चन कैसे देते हैं आपको, बहुत सारे आपको रैशनल नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ एडिशन सब्ट्रैक्शन दे विल गिव यू, राइट, एज प्रोवाइडेड इन योर एक्सरसाइज नंबर 1। ठीक है, तो व्हेन यू विल सॉल्व देम, जब आप उसको सॉल्व करोगे तो यू हैव टू अप्लाई द प्रॉपर्टी अकॉर्डिंगली। हाँ, इसीलिए मैंने सीया लास्ट टाइम भी आपको बोला था दैट यू हैव टू रिमेम्बर कि ये प्रॉपर्टीज किस किस कंडीशंस में भी अप्लाई। For example, whether they are applied in addition or subtraction or division or multiplication, because not all properties are applied in every condition and every situation. जैसे associative property है आपकी, that will be applicable only in the case of multiplication or addition, है ना, subtraction या फिर division में it will not work। अब इसमें होगा क्या, for example, if I write 2 plus 3 plus 5, ठीक है, then it will be 2 plus 3 plus 5 is 8, and this will be 11, sorry 10, I'm sorry, ठीक है। Now if I add firstly 2 and 3, then I'll add 5, so I should get the same answer, 2 plus 3 is 5, 5 plus 5 10, ठीक है। अगर मैं यही सेम चीज आपका सब्ट्रैक्शन में अलाउ करूं, सो व्हाट विल हैपन, 2 minus 3 minus 5, 2 minus 3 minus 5 will be, Sia, what will be 3 minus 5? -2. -2, very good. Then it will come 2, then minus minus plus and 2, and your answer will be 4. Now what if I do 2 minus 3 first, then minus 5, what will happen then? Here it will be Bhavani, 2 minus 3 will be 2 minus 3 will be -1, and here we have -5, minus minus will be plus, है ना, plus तो होगा, so 1 plus 5 will be 6, but the sign will be negative, है ना, because 5 is greater than 1 and it has the sign of negative, so they are not equal. It means that the associative property will not work in subtraction. Yeah, these type of questions will come as if your school gave you the MCQs type of questions, so they might ask that under what phenomena the associative property work, and they'll give you 4 options, obviously वो पूछेंगे, है ना, कि it works in addition, it works in subtraction, neither in addition neither in subtraction, है ना, so you have to mark the correct answer that it works in addition, है ना, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में तो केवल एडिशन में ही काम कर रहा है, सब्ट्रैक्शन में नहीं। सिमिलरली एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, हाँ, अब both of you were writing it down, okay, do it and then let me know. यहाँ पर just make the heading that it is in the case of addition and this one in the case of subtraction.
Done? हो गया? Okay. Sia, आपका done? Yes, ma'am. Okay. Now, chalo. Next is for multiplication. You have to apply the same concept, the same formula, and you have to do it by yourself. Tell me whether the answer is same. One second. Okay. Done, ma'am. Done. Okay. Bhavani, done? Done. Okay. Sia, tell me what is your answer? At I both the... got 36 for both of them. Okay. And Bhavani, you? Same. Same, na? Yes. This means that if I multiply 3 and 6 first, I'll get 18, and then by 2, I'll get 36. Similarly, if I multiply 2 and 3 first, I'll get 6, and then by 6, I'll get the same answer at both the sides. Okay, so it means that associative property works for the multiplication as well. Now, let's have one division question as well. Chalo. Now tell me, do it and then tell me. Let me take minus 12 divided by 2 and then divided by 3. This. Sorry. And then minus 12. Okay, now tell me whether your answer is same.
Done, ma'am. Okay, what is your answer for both of them? Uh, for the left side, I got -2, and for right side, I'm not sure if it's correct actually. Mhm. I got 0 for 2 divided by 3, so I just wrote -2. How would you get 0 for 2 divided by 3? Ma'am, since it was not possible, so I just wrote a 0. No problem, I'll tell you that. And Bhavni, what is your answer? Ma'am, for the left side, I got -2. For the right side, 2 divided by 3 would be decimal. It would be something about 0.6. So -12 divided by 0.6 का around हो गया -2. So I got it. You got -2. 18. So no, ma'am, I got -2 because 0.6 का if I divide by -12 तो उसका मैं 0 मैंने काउंट नहीं किया. अच्छा, इट मीन्स कि आपको दोनों तरफ -2 मिला है. Yes, ma'am. नहीं, -2 इधर आ ही नहीं सकता बिकॉज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विल नॉट वर्क इन द कॉन्सेप्ट ऑफ डिवीजन. नाउ सी, फॉर द LHS you both got the right answer, that is -2. अब आप देखो इधर क्या करोगे, आपने एक चीज पर फोकस नहीं किया है. -12 ऐसे लिख दो, अभी हम इसका कुछ नहीं कर सकते. डिवाइड का साइन है, लेट्स राइट इट. 2 डिवाइड बाय 3 आप ऐसे लिख सकते थे, है ना. वी कैन राइट इट लाइक दिस. और हमें पता है कि अगर आप कोई भी फॉर्म आपके पास, अगर कोई भी डिजिट इट इज रिटन इन दिस फॉर्म, हाँ, अब आप इसको ऐसे डायरेक्टली तो सॉल्व यू कैन नॉट डू इट, है ना. सॉल्व नहीं कर पाओगे. आप इसको रेसिप्रोकेट कर सकते थे. एंड व्हेनेवर वी रेसिप्रोकेट अ फ्रैक्शन in place of division we always get the multiplication sign, है ना. ये तो पता है कि आपको अगर इस तरह से कोई भी इस फॉर्मेट में यू आर गिवन द क्वेश्चन एंड ये रेसिप्रोकेट अगर आपको करना है तो ये डिवीजन आपका मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाएगा. नाउ सिंपल, 2 6 आर 12 -6 into 3. आपको यहाँ सॉल्व करने के बाद यू विल गेट -18 which is not equal. It means the associative property will not work in the concept of division. अच्छा, अब now see, मैंने तो ये आपको सिंपल इंटीजर्स वाले क्वेश्चंस करवाए हैं. अरे यहाँ पर हमने ये एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, और वेदर इट बी और मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, हाँ, मैंने आपको ये इंटीजर्स वाले क्वेश्चंस करवाए. अब अगर आप एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को इंटीजर्स में, होल नंबर्स में, और अल्टीमेटली जो हमें करना है रैशनल नंबर्स में भी अप्लाई करोगे तो हमेशा आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी केवल मल्टीप्लिकेशन और एडिशन में ही वर्क करेगी. अगर आप रैशनल नंबर्स का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो ही केवल मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन विल वर्क फॉर इट. डिवीजन में एंड सब्ट्रैक्शन में इट विल नेवर वर्क. ये ध्यान रखना. आपके एनसीईआरटी में ही आपके पास यू हैव योर पेज नंबर्स आई गेस 5 6 7. आपके ये पूरी प्रॉपर्टीज आपको डिफाइन कर रखे हैं, डिस्क्राइब कर रखे हैं, टेबल्स भी दे रखे हैं आपको साथ में. सो आपको उन टेबल्स को चेकआउट करना है एंड यू हैव टू सी कि विच प्रॉपर्टी इज वर्किंग फॉर विच कंडीशन, है ना. जैसे मैंने एसोसिएटिव आपको पूरा एक्सप्लेन किया है. तो अगर आप कोई होल नंबर का कॉन्सेप्ट चेक करोगे, इंटीजर्स चेक करोगे, या फिर आप रैशनल नंबर्स के क्वेश्चंस भी करोगे तो वो मल्टीप्लिकेशन और एडिशन में ही जाएगा. डिवीजन या फिर सब्ट्रैक्शन में इट विल नॉट वर्क. अच्छा, मैं आपको रैशनल नंबर्स का एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में ही एक क्वेश्चन आई एम गिविंग यू, आपको वो करके दिखाना है. एंड दिस इज द सेम क्वेश्चन आई हैव गिवन इन योर बुक. Okay, the question is, and it is this question is for addition, है ना. अरे मैंने बता क्यों दिया, मुझे पूछना चाहिए था. प्लस
3/5 plus in bracket we have -5/6. So this is one side of the equation, है ना? आप देख पा रहे हो? This is for addition and associative property. This is your A, this is B, and this is your C. Now you have to say कि क्या ये दूसरे कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर पाएगा? ये अब आप खुद सॉल्व करो. This is for your LHS. LHS सॉल्व करके RHS आप खुद लिखोगे, है ना? एसोसिएटिव का RHS आपको पता है ना? Just do it. करके दिखाओ मुझे. So, मैम मुझे समझ नहीं आया कि मैं इसको कैसे करूंगी, तो मुझे 2/3 इंटू इंटू नहीं है, प्लस है. प्लस देखो मैं बताती हूँ. 3/5 हाँ देखो भावनी, जब भी आपको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने हो ना, ये B + C साथ में इसीलिए लिखे हैं दैट कि आपको यू हैव टू सॉल्व दिस B + C फर्स्ट. पहले आप ये सॉल्व करो, उसके तो बाद इसको ऐड करना. वही मैं कह रही हूँ, तो वो 3/5 -5/6 हो जाएगा क्योंकि हाँ, प्लस माइनस है. प्लस माइनस ये आपका, आप जब ब्रैकेट ओपन करोगे -5/6 हो जाएगा. देन यू हैव टू टेक द एलसीएम, है ना? डिनोमिनेटर सेम करोगे, उसके बाद आप अपना आंसर करोगे. ओके. भावनी, सिया, कहाँ चले गए दोनों? हेलो मैम मुझे क्वेश्चन था कि मेरा आंसर आया 3/5 -5/6 का 7/30. तो मैम अब मैं उसको -2/3 से प्लस करूंगी या माइनस? प्लस करोगी. ये आपको जो भी B + C मिला है ना? आपको ये जो भी B + C मिला है, आपको फिर A में ऐड करना है ये. तो मैम C, फिर हाँ तो बोलो. -A है, लाइक -2/3 है, तो
फिर से प्लस माइनस माइनस में हो जाएगा। हाँ, यहाँ पर अगर आपका यहाँ पे माइनस में आता है आंसर तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ना, बाहर आएगा जब। और फिर अगर ये माइनस हो जाता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। हाँ, बाद में जब ऐड करोगी तो प्लस होएगा। तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा 2 by कंफ्यूजन लगेंगे। हाँ 2 बोलो। by 3 minus 7 by 30। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये आपको 3/5 प्लस -5/6 करने के बाद क्या मिला? बताओ दोनों बताओ, भावनी क्या मिला आपको? हम 7/30। 7/30 मिला है या फिर -7/30 मिला? हम -7/30। हाँ पूरा बोलो। सिया, यू ऑल्सो गॉट द सेम? Ma'am, I didn't really solve it. I was still doing it. अरे सिया, ऐसे कैसे सॉल्व करो भाई? But देखो I'm not. इट्स 640 एंड वी आर ऑन दी, अभी एक सिंगल प्रॉपर्टी करी है हमने, वी आर ऑन दी फर्स्ट प्रॉपर्टी, है ना? क्लोजर भी अभी है एंड कम्यूटेटिव भी है। मैम फिर 2.3 प्लस 7/30 हो जाएगा, क्योंकि देखो -2.3 प्लस यहाँ पे -7/30 तो माइनस प्लस माइनस हो गया, फिर -2/3 का माइनस और माइनस फिर प्लस हो गया। देखो देखो इधर देखो, ये हो गया आपके पास, इतना मिल गया आपको, यस राइट? मैम। नाउ 2/3 आपका ऐसे ही रहेगा, इसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पे अब आपका ब्रैकेट ओपन होना है ना? ब्रैकेट ओपन करोगे तो बाहर आपके पास प्लस का साइन है, अंदर आपके पास नेगेटिव है। सो जब ब्रैकेट ओपन करते हैं तो साइंस भी ओपन होते हैं, ये तो प्लस माइनस हो जाएगा। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, है ना सिया? अब एंड 7/30 विल रिमेन द सेम। अब आपको अब फिर से डिनोमिनेटर सेम करने हैं। yes, डिनोमिनेटर सेम करके अब आप यहाँ करोगे, यहाँ पे जो भी नंबर आएगा माइनस में चलेगा, यहाँ पर भी आपको जो भी डिजिट मिलेगी माइनस में आएगी। देन यू विल डू माइनस माइनस प्लस, है ना? माइनस माइनस प्लस होता है। चलो जल्दी से, अभी तो एलएचएस कर रहे हो, आरएचएस भी करना है अभी, फटाफट कुछ करो जल्दी जल्दी, चलो बहुत देर हो गई है। अब मजाक में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो दोनों बैठे हुए? हाँ, भावनी ने तो वीडियो ही बंद कर लिया है कि मुझे बात नहीं करनी। मैम आपने फर्स्ट क्लास शुरू करी है 8th की आज, और क्या क्वेश्चन दे दिया है मुझे? हाँ भावनी, ऐसी बात है? नहीं मैं बस चिंता मत करो, वेडनेसडे से हम टाइमिंग तो डिफरेंट रखेंगे ही, मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट कर देंगे, विल गो अकॉर्डिंग टू द स्कूल। मैम स्कूल जाके भी थक गए बहुत, हाँ ये बात तो है, पूरा दिन पढ़ के थक गए। पढ़ाई तो करनी पड़ेगी लेकिन कोई और ऑप्शन नहीं है। अच्छा कितने बजे आती हो स्कूल से भावनी? मैम मैं 4:30। 4:30 एंड CIU आप, अच्छा आपका तो ऑनलाइन चल रहा है, ओके। Ma'am, I got the LCM as 30 itself. हाँ 30 आएगा LCM। मैम मेरे को कंफ्यूजन हो रहा है, मुझसे नहीं हो रहा। पूछो पूछो, कंफ्यूजन कर लिया, क्लियर करने के लिए तो है हम यहाँ पर। पूछो कंफ्यूजन, पूछो जल्दी, क्या हो रहा है? मैम मुझे वो नहीं हो रहा, लाइक क्या कहते किसमें हैं किसमें हो रहा है? साइंस में? यस मैम कि अब मुझे 7/3 -2/3 प्लस 7/30 मिल गया। प्लस नहीं, माइनस होगा ना, प्लस माइनस माइनस। हाँ सॉरी हाँ, हाँ तो मेरे को -2/3 -7 माइनस, अरे यार 7/30 हो गया। अब आपको yes, सिंपल, अभी साइन को भूल जाओ कि साइन क्या है क्या नहीं है, भूल जाओ, फॉरगेट इट। आपको सिंपल से एक काम करना है, डिनोमिनेटर्स को सेम करना है। अब 3 और 30 का एलसीएम लोगे तो आपको 30 मिलेगा। 13।
नाउ वी हैव टू मेक द डिनोमिनेटर सेम। यहाँ तो 30 इसके पास ऑलरेडी है, यहाँ पर इसके पास केवल 3 है, तो हमें पता है कि ऑब्वियसली वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 10, है ना, बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विल बी मल्टीप्लाइड बाय 10। तो यहाँ पे 30 हो जाएगा, हमारे पास लिखा है यहाँ पर 20 हो जाएगा, ठीक है। नाउ साइन विल बी नेगेटिव, क्योंकि ये -2/3 है, तो -20 लिखोगी, राइट। और यहाँ पर आप क्या लिखोगे, सिंपल सा आपको माइनस का साइन यहाँ पर है एंड 7 आपको सिंपल उतार देना है, क्योंकि कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं करनी है। Ma'am, हाँ, I got the answer as 27/30. यू गॉट द आंसर एज 27/30, ठीक है। करेक्ट होगा। आप यहाँ पे माइनस है आपके पास, ये भी यू हैव प्लस हो माइनस, जाएगा। प्लस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, तो 27 तो डेफिनेटली आएगा। सिया, आर यू मिसिंग समथिंग इन द आंसर? कुछ रहता है? कुछ नहीं रहता आंसर में। नेगेटिव का साइन कौन लगाएगा? I thought minus. 20 is greater than 7 and it has the sign of negative, तो ये भी तो साथ में चलेगा, इसे अकेला क्यों छोड़ दिया? अब नाउ सी, -27/30 है, हम इसको लोएस्ट फॉर्म में ला सकते हैं ना। यू कैन क्लियरली सी 3 9s are 27, 3 10s are 30, है ना। तो आपके पास फाइनल आंसर -9/10 आएगा। आ गया? चलो, Yes. नाउ LHS सॉल्व हो गया, यू हैव टू सॉल्व द RHS नाउ। और RHS में आई विल नॉट स्पीक अ वर्ड, आई विल नॉट टेल यू एनीथिंग, बिकॉज बहुत RHS का आपको पता है ना क्या करना है। -2/3 प्लस 3/5, ये आप RHS में A प्लस B पहले करते हैं, देन प्लस -5/6 आप बाद में करोगे, राइट। डू इट एंड देन लेट मी नो। Done now. Done. Okay, what do you got for -2/3 plus 3/5? Now 1/15. 1/15. 15. Ma'am, I got a different answer. You got the different answer. What do you got? I got -7/15. चेक करो दोनों अपने अपने आंसर। चलो, एक को 1/15 मिल रहा है, अदर वन इज गेटिंग 7/15।
check it one more time and then let me know. LCM will be 15. ठीक है, denominator में 15 होगा, that I can say that. हाँ, but न्यूमरेटर दोनों का गलत है, 1 and 7 नहीं आएगा. भावनी, यू चेक, तुमने थोड़ी सी गलती करी है बस आंसर में. सिया, and you did the calculation mistake. 7 नहीं आएगा in the numerator. मैम -1/15 आएगा. हाँ, अब कैसे मिल गया? मैम मैं तो ऑन करो अपने, दोनों बंद करके बैठ जाते हो बार बार. मैम मेरी ना बार बार ब्राइटनेस ज्यादा हो जा रही है, मेरे को ज्यादा ब्राइटनेस पसंद नहीं है, तो मैं बार बार उसको ठीक कर रही हूँ, इसलिए कैमरा ऑफ तो हो रहा है. ऑटो हो रखा होगा, उसको एडजस्ट यस मैम, पता नहीं वो क्या है, बकवास है, पता नहीं क्या है. मैम हो गया, LHS = RHS, दोनों का आंसर आ रहा है -9.10. अच्छा, ये कैसे किया? पहले ये ब्रैकेट ओपन करके क्या किया है यहाँ पे? प्लस माइनस. सिया, टेल मी. हाँ ओके. सिया, 1/15 you got or not? -1/15. Oh, I think she has some network issue. Bhavni, you tell me. -1/15 and यहाँ पे what you did, plus minus? यस मैम, फिर माइनस हो गया एंड देन उसके आगे का लाइक उसके स्टार्टिंग वाला माइनस एंड बीच वाला माइनस 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 प्लस हो गया, तो फिर हो गया -1 -15 प्लस 15 and 6 का LCM क्या आया आपका, भावनी? एक सुना, मेरा थोड़ा मसी हो गया. एक Sia, you tell me what is your LCM here? I was stuck on that actually. Oh, how will that work, huh? These are the basics. ऐसे कैसे you got stuck? Okay, give it a try. Just try it one more time. Oh, See, in your school, are you still doing the rational numbers or done with that? ma'am, we finished rational numbers today itself. Okay, and now what are you doing? Exponents and powers. Oh, they jumped to that chapter, exponents and power, leaving behind all the chapters. We have a term test coming, so for completing the portion, they must have started. Okay, when will you have your term test? 10th May. Okay, 10th of May. And how many chapters are coming? They haven't given the portion yet. Okay. So you have completed with the rational numbers and doing the exponents and power. That is the chapter number 12. Okay, all right. हाँ, दोनों का आंसर मिला, करेक्ट आंसर आया है किसी का? जस्ट टेल मी दैट. आज एक ही प्रॉपर्टी में पूरा टाइम निकल गया है, ऐसे कैसे चलेगा भाई? हाँ, -9.10 आंसर है, राइट. मिल गया. व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 15 and 6? 30. सिया, आपको मिला 30? Yes, ma'am. And okay, then what will come at the numerators? -2 minus Yes, ma'am. and both your LHS and RHS are equal. This is how the associative property work. बस आपको एक चीज याद रखनी है that it works only in किसमें वर्क करता है? It works only in Addition and multiplication. हाँ, right, and not in subtraction or division. उसमें काम नहीं करेगा, right? चलो. Sia, in the previous class I gave you one homework. Yes, Right? ma'am. You remember what was that homework?
You had asked me to do the example 1 and 2 and redo the third question from exercise 1.1 and the fifth question. Ma'am, 1 second. Okay. And have you done these questions and examples? Yes, ma'am, I did it. You did. Yes. Any problem? I was a little confused at starting, but I got it. You got them. Yes. Okay. How you did the example number 1? Which property you applied? Which property you applied? Yes, ma'am. Sorry, I'm not. What are you? No problem. कोई बात नहीं भावनी। सिया बताओ मुझे प्रॉपर्टी के साथ किया है या फिर बिना प्रॉपर्टी के सॉल्व किया है? And if you have solved it without property, then what was your LCM? What was the denominator? Ma'am, I don't know how to explain or like how I did it. Can I like show it to you? Okay, show it to me. All right. I'll just stop share 1 second. 462 minus 125. Your answer is correct. That is correct. But why you are not able to explain me that how you did that? And why you took the different LCM? Why not at the same time you took the LCM of 7, 11, 21 and 22? एक बारी में क्यों नहीं किया? हाँ? I was kind of confused about how to do it. So I asked my mom for help and she, explained me in this way. So Okay, no problem. See, Sia will meet tomorrow and we'll continue with the same chapter. Because as you are saying, from 10th of May, your unit tests are arriving. You know? So we have to complete this chapter as soon as possible so that we can move on with the next chapter so that we can do the next chapter. And Bhavni, you, because your school syllabus is different as that of Sia, so your class timings will be changed from Wednesday onwards. Now your classes will be on Monday, Wednesday and Friday, but at 7 to 8. Right? After timing 7 to 8 रहेगा. And Sia, your timing will be same Monday to Thursday 6 to 7. ठीक है, बिकॉज दोनों के सिलेबस क्लैश हो रहे हैं, तो आई डोंट वांट कि किसी का कुछ भी मिस हो, और ऑब्वियसली दोनों को एक साथ तो आई कैन नॉट टीच ना, डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स एक साथ नहीं पढ़ाए जा सकते, सो जरूरी है कि टाइमिंग्स को चेंज किया जाए. बट आप दोनों के लिए एक होमवर्क है that Sia in the previous class I explained you the 3 properties, है ना, all the 3 properties I explained you. So what you need to do is you have to prepare a table for the closure for associative and commutative property, and you have to write down that in which condition which property works, right? For example, आपने associative का table बनाया, तो आपने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, यू मेड द 4 कॉलम एंड राइट यस और नो जिसके लिए भी वो वर्क करता है. सिमिलरली डू द सेम विद द कम्यूटेटिव एंड द क्लोजर. आई विल चेक टुमारो इन द क्लास, आई विल चेक दैट टेबल. हाँ, उसके बाद हम कल ये विल डू द फर्स्ट एक्सरसाइज. एंड भाविनी, आपका फर्स्ट चैप्टर ही मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हुआ है, सो जस्ट ट्राई टू रिमेम्बर ऑल दी फॉर्मूलाज, है ना, just try to memorize all the formulas up till now जो भी आपने पढ़े हैं formulas, है ना, जैसे सर्कल का, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ये सब तो बहुत कॉमन है, आपको पता ही होंगे, ट्रेपीजियम. अच्छा भाभी, टेल मी, एनसीईआरटी की फॉलो कर रहे हैं या फिर कुछ और चल रहा है? एनसीईआरटी ही फॉलो हो रहा है, ठीक है. तो हम फिर भाभी अब हम मिलते हैं वेडनेसडे में, ठीक है. थोड़ा सा बस रैशनल नंबर्स का रिवीजन हो गया है भावनी का. चलो, ओके. All right then. Bye bye both of you. Let's meet in the next class. thank you, ma'am. Bye.